Assalamu alaikum, dear students. Since in previous lectures I discussed the morphology of root and the morphology of stem. In the vegetative morphology, today I am going to discuss the leaf morphology. As you know about the conditions which are prevailing this time in the society, and this is a very small try. It is a very small try from my side. Hope you appreciate it. नाउ एज फार एज दिस लीफ मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न, सबसे पहली बात बेटा करेंगे लीफ। तो किसी को बेटा समझाने की जरूरत नहीं है कि लीफ होता क्या है। लीफ प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो यूजुअली किस काम आता है, फोटोसिंथेसिस। दैट मींस इसका मेजर फंक्शन जो है इट इज फोटोसिंथेसिस। Besides that, this leaf is also involved in case of transpiration. It is also involved in case of gaseous exchange. Transpiration is the loss of water in the form of water vapor. गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब है? एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिस ऑक्सीजन की वजह से दुनिया में एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का वजूद है। सो गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस are three important processes which are associated with the leaf. Now, as far as this leaf is concerned, जहां तक सवाल बेटा इस लीफ का है, एक स्टम जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। आई नीड यू टू कंसंट्रेट ओवर हियर प्लीज। एक स्टम जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। जिस पॉइंट से बेटा लीफ अराइज होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है नोड। जिस पॉइंट से एक लीफ अराइज होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है नोड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। इन दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। So, when I discuss the morphology of leaf, the point at which leaf arises, this point it is called a node. उसके बाद बेटा ये जो लीफ है, I said broadly classified इस लीफ के तीन पार्ट्स हैं। One part it is called as leaf base, second part it is called a petiole, third part it is called as lamina. First one it is called a leaf base. Leaf base क्या है? Leaf base क्या? It is leaf base is nothing but it is the point of attachment of this petiole to the stem. The point of attachment of petiole to the stem it is called leaf base. It is also called as hypopodium. उसके बाद the stalk of the leaf which may or may not be present. The stalk of the leaf it is called as petiole, and this petiole it is called as mesopodium. नाउ पीट्यूल का एक एंड जो होता है जिसके ऊपर एक फ्लैटनेट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, that means the structure which is normally associated with the photosynthesis, this part, that means from this end to this end, it is called as leaf blade. It is also called as lamina. Lamina is also called as epipodium. So the three parts of leaf you can easily remember. One leaf base, second one petiole, third one it is called a lamina. अब लैमिना की जहां हम बात करते हैं, लैमिना का जो पेरिफेरी वाला पोर्शन है, दिस पेरिफेरल पोर्शन ऑफ लैमिना इट इज कॉल्ड मार्जिन, एंड द टिप ऑफ द लैमिना इट इज कॉल्ड एज एपेक्स। जो लैमिना का टिप है बेटा, इस टिप को कहा जाता है एपेक्स। नाउ देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन among students that is called as axil. हम बेटा जब बात करते हैं बर्ड्स की, चूंकि ये बोर्ड छोटा है, प्लीज थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। जब हम बर्ड की बात करते हैं, वी से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, बर्ड दो टाइप्स के होते हैं। वन टाइप ऑफ बर्ड इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड, एंड अनदर टाइप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। एक बर्ड जो स्टम के टिप पे होता है, टॉप पे होता है, दैट बर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड। और एक बर्ड जो प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ लीफ, एक बर्ड जो प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ लीफ इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। लेकिन सवाल यहां पे है कि एक्सिल होता क्या है? एक्सिल इज नथिंग, आप देखो बेटा यहां कॉन्सेंट्रेट करोगे, दिस इज द स्टॉक ऑफ लीफ। एक स्टॉक ऑफ लीफ जो है ये एंगल एक बनाता है स्टम के साथ। नाउ दिस एंगल सो फॉर्म्ड, दिस एंगल इट इज कॉल्ड एज एक्सिल, and in the axil there is always present a bud. This bud is called as axillary bud. Hope you understand what you mean by axillary bud. Short में हम कहें तो वो वाला bud जो in the axil of leaf होता है, this bud is called as axillary bud. Besides the axillary bud, at the leaf base there are two smaller lateral appendages. ये जो blue color के दो smaller lateral appendages है,
These two smaller lateral appendages are called as stipules. The two smaller lateral appendages are called as stipules. Now, one more important point I would like to add here. Sum total of all the leaves which are present on a plant, it is called as phylum. Now, phylum is nothing but it is sum total. It is sum total of all leaves. It is sum total of all leaves which are present on a particular plant. The sum total of leaves, it is called as phylum. Now, regarding this leaf, let me discuss the parts of leaf one by one. एक एक करके बेटा इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात बेटा petiole की करेंगे. Now, you already know that this petiole is called as stalk of leaf. अगर ऊपर वाली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, the stalk of leaf, it is called petiole. Now, petiole में यहाँ दो conditions है. Either the petiole is absent or the petiole is present. पीटियोल या तो प्रेजेंट हो सकता है या तो एब्सेंट हो सकता है. अगर पीटियोल एब्सेंट है उस वाले लीफ को कहा जाएगा सिसाइल, और अगर पीटियोल प्रेजेंट है उस वाले लीफ को कहा जाएगा पीटियोलेट. अगर पीटियोल एब्सेंट है we call it as sessile. अगर पीटियोल एब्सेंट है we call this type of leaf as petiolate. In the same way, I will discuss stipule. Regarding the stipules, आपको ऑलरेडी कहा कि stipules जो है बेटा दो lateral appendages है which are present at the base of leaf. Now again regarding the stipules, these stipules may be present, or they may be absent. अगर stipules present है एक leaf में, उस type of leaf को कहा जाएगा stipulate. और अगर एक लीफ में स्टिप्यूल्स एब्सेंट है उस टाइप ऑफ लीफ को कहा जाएगा एक्स्टिपुलेट. अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है we call this type of leaf as stipulate. अगर ये एब्सेंट है we call this type of leaf as exstipulate.